Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies. Today, we are going to do our chapter 7, which is Adobe Photoshop CS6. So, without wasting any further time, let's start the chapter. Name of the chapter is Adobe Photoshop CS6, and the topics that we will study are Adobe Photoshop interface, no Adobe Photoshop palette, no Adobe Photoshop tool panel, and no basic image editing techniques. Now, Adobe Photoshop is an image editing application software. ये allow करता है हमें to create, magnify, combine, and optimize digital images. It is mainly used by professional designers, photographers, graphic producers, and web developers for creating and editing images. Adobe Photoshop CS6 एक पॉपुलर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमें एक वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है consistent with Adobe Illustrator, Adobe Design, Adobe Photoshop, and other products in Adobe Creative Suite. Here you will learn how to get started, how to use the interface, and how to modify images with basic editing skills. Now, Thomas Knoll invented the first version of Photoshop named as Display Program in 1987. Adobe Photoshop 1.0 was launched in 1990. Now, getting started, begin by opening Adobe Photoshop CS6. On a PC, click Start, then Programs, Adobe Photoshop CS6 या फिर click on a shortcut on the desktop. On a Mac, click Go, Applications, Adobe Photoshop CS6, Photoshop CS6 shown in figure 1 या फिर click on icon on the top. Setting up the document. To create a new document, click on File option, then New. This will open a document setup dialog box. Here you will be able to name your file, set up the correct page size and orientation for your document. Options include page size and orientation. Change the page size by typing the value for width and height. Page size represent करता है final size that you want after bleeds or trimming other marks outside the page. And in the preset drop down menu आप find कर सकते हो such common sizes as letter, legal, tabloid, etc. Typing in exact values या फिर height and width gives you more control over the size and orientation of your page. Resolution. This is the number of pixels on a printed area of an image. Higher the resolution, the more the pixels are on the page. The better quality of the image. However, high resolution increase करता है size of the file. Standard recommended resolution for printed images is 150 to 300. For web images, it is 72. Color mode. Choose a color mode that will be best fit to your project. For example, when making a graphic for a website, choose RGB. When making an image for print, choose CMYK. Now, background content. Choose a background, white color या फिर transparent. When you have entered all your document settings, click OK. Opening an image from a disk. If the image you have is saved on a disk or your computer, select File option and then Open. Then navigate to the disk, drive or file where your image is located. Choose the image file and click Open. At this point, you may want to save your image under different names so that you can always have the original to fall back on in case of mistake. To save your file, select File option, then Save As, and then type the new name for your file in the dialog box. Interface layout. यहाँ पे we have main menu, palettes, color, layers, history, image, toolbar and image name. So menu bar, if you look at the top of the screen तो आपको menu bar show होगा जो contain करता है main functions of Photoshop जैसे file, edit, image, layer select, filter, analysis, 3D view, window and help. Toolbar, it is most of the major tools are located in the toolbar for easy access. Image, यहाँ पे the image will appear on its own window once you open a file. Image name, यहाँ पे name of any image that you will open will be at the top of the image window. Palettes contain करते हैं functions that help you to monitor and modify images. By default palettes जो होते हैं वो stacked होते हैं together in groups. These are the palettes that are usually visible. Color, adjustments and layers. If none of the palettes are visible, go to the window in menu bar and choose the palettes that you need. Below is a description of the most commonly used palettes in Adobe Photoshop CS6. Now layers, जैसे कलर है तो कलर पैलेट डिस्प्ले करता है करंट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स एंड आरजीबी वैल्यूज फॉर दीज कलर्स. आप यूज कर सकते हो स्लाइडर्स का टू चेंज द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स इन डिफरेंट कलर मोड. स्वॉचेस पैलेट में आप चूज कर सकते हो फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर एंड ऐड कर सकते हो कस्टमाइज कलर टू द लाइब्रेरी. स्टाइल पैलेट शो करती है हमें अलाउ करती है टू व्यू सेलेक्ट एंड अप्लाई प्रीसेट लेयर स्टाइल्स. बाय डिफॉल्ट प्रीसेट स्टाइल रिप्लेस करता है करंट लेयर स्टाइल को and you can use style in the palette or add your own using your create new style icon. History palette store करता है display करता है each action performed allowing you to jump to any recent stage
of the image alteration. The alterations should be created during the current working session. After saving या फिर closing the document, history palette जो है वो सारा content clear कर देता है. Each time जब भी आप changes apply करते हो अपने image में, एक new state of that image is added to the palette. It is important to know that once you click on any of the previous stages, all the changes were made after it will be lost. Adjustment layer palette हमें एक ability provide करती है to apply effects to a group of layers in Photoshop, and then you can edit the effect layer while preserving the original layers. Layers ये help करती है हमारी to organize work into distinct levels that can be edited and viewed as individual units. हर एक जो Photoshop CS6 document है वो contain करता है at least one layer. Creating multiple layers के लिए वो हमें allow करते हैं to easily control how your artwork is printed, displayed and edited. हम यूज कर सकते हैं लेयर्स पैलेट का ऑफन while creating a document. So ये crucial है to understand what it does and how to use it. Layer visibility, ये जो आई है ये शो करती है the selected layer is visible. Click on या फिर off to see or hide the layer. Layer locking option, हमें क्लिक करना होता है checkered square icon पे to lock the transparency. Click the brush icon to lock the image. Click the arrow icon to lock the position and click the lock icon to lock all the options. लेयर ब्लेंडिंग मोड ये डिफाइन करता है कि कैसे जो आपके लेयर के पिक्सेल्स हैं वो ब्लेंड होते हैं विद अंडरलाइंग पिक्सेल्स इन द इमेज. बाय चूजिंग अ पर्टिकुलर ब्लेंडिंग मोड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू आप क्रिएट कर सकते हो वैरायटी ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स. फिल बाय टाइपिंग अ वैल्यू या फिर ड्रैगिंग द स्लाइडर आप इजीली स्पेसिफाई कर सकते हो ट्रांसपेरेंसी. Opacity, by typing in a value या फिर dragging the slider, you can specify transparency of the object layer. Layer lock icon show करता है when the layer is locked and disappears when it is unlocked. Double click the icon to unlock the layer. Layer option menu, click करना है हमें black triangle पे to display the following options जैसे new layer, duplicate layer, delete layer, layer properties etc. Some of the options जो है वो presented होते हैं as icons at the bottom of the layer palette. Link layers, they can be used to link layers together. Layer styles, layer has a style and F icon show करता है होता है at the bottom of the layer palette. Click the little black triangle to see all the options. Layer mask ये एक area है fundamental tool in the image manipulation जो allow करता है to selectively modify the opacity of the layer belong to. Layer set ये option help करता है to organize images with the help of multiple layers. Click the icon to create a folder for several layers. Now create new fill या फिर adjustment layer, have the same opacity and blending more options as images layers and can be rearranged, deleted, hidden and duplicated in the same manner as image layers. हमें क्लिक करना होता है आइकन पे एंड सेलेक्ट करना एक ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू फिल या फिर एडजस्टमेंट लेयर. क्रिएट न्यू लेयर, क्लिक दिस आइकन टू क्रिएट अ न्यू लेयर. डिलीट लेयर के लिए हम इस पे क्लिक करते हैं जब भी हमें किसी लेयर को डिलीट करना होता है इन द लेयर पैलेट एंड ड्रैग करते हैं उसको टू द ट्रैश आइकन या फिर सिलेक्ट करते हैं लेयर को एंड क्लिक ऑन दी आइकन. Adobe Photoshop tools में we have marquee tool, move tool, lasso tool, magic wand tool, crop tool, eyedropper tool, spot healing brush tool, paint brush tool, clone stamp tool, history brush tool, eraser tool, paint bucket tool, blur tool, dodge tool. We have pen tool, type tool, rectangle tool, path tool, hand tool, zoom tool, background tool and foreground tool. Selection tools, icon टूल्स मूव टूल्स एंड इट फंक्शन. तो मूव टूल मूव करता है सिलेक्शंस को, लेयर्स को एंड गाइडलाइंस को. इसके लिए हमें क्या करना है, यूज टू सिलेक्ट एंड मूव द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ पेज. क्लिक करना है टूल बटन पे, देन क्लिक ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑन योर पेज यू विश टू मूव. देन मार्की टूल, ये जो टूल है ये सिलेक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट को बाय ड्रॉइंग द रेक्टेंगल या फिर एलिप्स अराउंड इट एंड इसके लिए हमें टूल बटन पे जाना है. देन क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर, चूज अ रेक्टेंगुलर या फिर एक एलिप्टिकल मार्की. ड्रैग द मार्की ओवर द एरिया ऑफ द इमेज दैट यू विश टू select. Lasso tool makes freehand polygon selection and again हम इसको कैसे select करते हैं, select an object by drawing a freehand border around it. Click the tools button, drag to draw a freehand border around the area of the image that you wish to select. Magic wand tool, the magic wand tool जो है ये select करता है similarly colored areas को and by specifying the color range or tolerance you can control what the magic wand tool selects. Crop tool, ये crop tool trim करता है images को. Click the tools button, then click and drag the tool over the part of the image that you want to keep. यहाँ पे हमें जो पार्ट चाहिए इमेज का हम उसको
उस बॉक्स के अंदर रखते हैं, रिसाइज करते हैं सिलेक्टेड एरिया को बाय ड्रैगिंग द स्क्वायर्स एट द साइड्स एंड कॉर्नर्स, क्लिक द रिटर्न या फिर एंटर की व्हेन यू क्रॉप द बॉक्सेस साइज करेक्टली। आई ड्रॉपर टूल जो है ये सैंपल कलर करता है इन एन इमेज। सेलेक्ट द टूल, क्लिक ऑन द कलर इन द इमेज दैट यू विश टू सैंपल, द कलर बॉक्स विल डिस्प्ले द कलर। ऑल्टरेशन टूल पहला आता है हमारे पास, हीलिंग ब्रश। तो ये करेक्ट करता है स्मॉल ब्लैमिशेस इन स्कैन फोटोज। सेलेक्ट द टूल, होल्ड डाउन द ऑल्ट की एंड लेफ्ट क्लिक ऑन द बेस कलर दैट यू नीड टू हील, देन लेफ्ट क्लिक ओवर द ब्लैमिश। ब्रश टूल पेंट करता है ब्रश स्ट्रोक्स। Select the tool, then click on selected area, drag the draw lines. Use the options bar to change the brush mode, opacity and flow. Tone stem tool जो है ये पेंट करता है with sample of an image. Take a sample of an image and apply over another image या फिर part of the same image. Select करना है tool, hold down the alt key, left click on the certain point of the document where you want to start your copy point. Now then put your mouse over whatever part of the new document you want to picture to go. Hold down the left mouse button and drag the mouse across the page to copy the picture. Art History Brush. Art History Brush tool paints with stylish strokes to simulate करते हैं look of different paint styles using a selected state या फिर snapshot. टूल को सिलेक्ट करना है, स्पेसिफाई करना है ब्रश, ब्लेंडिंग मोड, ओपेसिटी, स्टाइल, एरिया एंड टॉलरेंस। इरेजर टूल ये इरेज करता है पिक्सेल्स एंड रीस्टोर करता है पार्ट्स ऑफ एन इमेज टू अ प्रीवियसली सेव्ड स्टेट। सेलेक्ट करना है टूल को, क्लिक ऑन द पार्ट ऑफ द इमेज दैट यू वांट टू इरेज एंड ड्रैग टू इरेज द पिक्सेल्स। पेंट बकेट अप्लाई करता है कलर टू अ selected part of the image to an entire layer. Select a layer that you wish to apply the paint bucket tool. Click the tool button, click on starting point and click the area that you wish to fill. Blur. Blur ये क्या करता है, हमारे शार्प एजेस को ब्लर कर देता है ऑफ एन इमेज। हमें सेलेक्ट करना है एक एरिया विच वी विश टू अप्लाई द टूल, देन क्लिक ऑन द टूल बटन एंड चूज द ब्रश मोड एंड स्ट्रेंथ, ड्रैग द ब्रश अलोंग द एजेस। ड्राइंग एंड सिलेक्शन टूल्स। पाथ सिलेक्शन टूल हमारे को मदद करता है टू शेप और सेगमेंट सेक्शन शोइंग एंकर पॉइंट्स, डायरेक्शन लाइंस एंड डायरेक्शन पॉइंट्स। हमें सेलेक्ट करना है पाथ एंड पाथ सेगमेंट्स। सेलेक्ट द टूल एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द पाथ। टाइप जो टाइप टूल है ये क्रिएट करता है टाइप ऑन एन इमेज। सेलेक्ट द टाइप टूल, क्लिक ऑन द पेज एंड बिगिन टू टाइप। यू कैन स्पेसिफाई द फॉन्ट एंड साइज इन द ऑप्शन बार। आप ऑल्सो यहाँ पे रिसाइज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स को बाय ड्रैगिंग द स्क्वायर्स एट द साइड्स एंड कॉर्नर्स। हमें यूज करना है मूव टूल टू मूव द टेक्स्ट ऑन द पेज। पेन टूल हेल्प करता है टू ड्रॉ स्मूथ एज्ड पाथ। सेलेक्ट करना है टूल, क्लिक ऑन द पेज एंड ड्रैग टू ड्रॉ अ पाथ। क्लिक एंड ड्रैग द एंकर पॉइंट्स टू मॉडिफाई द पाथ। लाइन शेप। लाइन टूल ड्रॉ करता है लाइन इन अ नॉर्मल लेयर और अ शेप लेयर। ड्रॉ करना है एक स्ट्रेट लाइन। अदर शेप्स दैट आर हिडन इन दिस टूल आर राउंडेड, रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, लाइन टूल एंड कस्टम शेप टूल। हमें सेलेक्ट करना है अपने टूल को, क्लिक एंड ड्रैग करना है ऑन द पेज टू ड्रॉ अ लाइन। हैंड ये अलाउ करता है टू मूव अराउंड विद इन द पेज इमेज। सेलेक्ट करना है टूल को, क्लिक ऑन द स्पॉट ऑन द पेज, होल्ड आउट द माउस डाउन एंड ड्रैग टू मूव इन द एरिया। मैग्नीफाई ये रिड्यूस करता है डिस्प्ले ऑफ एन इमेज इन योर इमेज विंडो। सेलेक्ट द टूल, चूज जूम इन या फिर जूम आउट ऑप्शंस इन द ऑप्शन बार। क्लिक ऑन द एरिया ऑफ द इमेज दैट यू विश टू मैग्नीफाई या फिर रिड्यूस। When using either lasso या फिर polygon lasso tool, you can toggle between the two by pressing Alt key. Basic image editing. Now that you know how to find your way around in the Adobe Photoshop CS6 interface and are familiar with the most common commands, palettes and tools, you can start doing some basic image editing, and now you will learn how to crop, resize, correct and sharpen, blur your images. पहला आता है palettes. On the right side of the Photoshop window, this is a separate area for palettes. There are floating dialog boxes with different options to help users to edit the images. क्रॉपिंग इमेज। क्रॉपिंग एक मोस्ट बेसिक एडिटिंग टेक्निक्स हैं जो इम्प्रूव करती है हमारी इमेज को। क्रॉपिंग हेल्प करती है टू ब्रिंग आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन योर इमेज एंड फोकस ऑन द व्यूअर्स अटेंशन ऑन दीज फीचर्स। क्रॉपिंग इज ऑल्सो अलाउज यू टू मेक योर इमेज स्टैंडर्ड फोटो साइज। देयर आर सेवरल वेज फॉर क्रॉपिंग योर इमेज, जैसे क्रॉपिंग विद क्रॉप टूल, क्रॉपिंग टू स्पेसिफाई साइज, क्रॉपिंग विद द मार्की टूल। क्रॉपिंग विद द क्रॉप टूल, तो अगर हमें क्रॉप करना है, ये अलाउ करता है टू मेक द प्रिसाइज सिलेक्शन ऑफ एन इमेज दैट यू विश टू एडिट। तो उसके लिए हमें ओपन करना है एक इमेज जिसे हमें क्रॉप करना है। सी गेटिंग स्टार्टेड फॉर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस।
सेलेक्ट करना है क्रॉप टूल को फ्रॉम द टूल बॉक्स. इट विल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट योर एंटायर इमेज. हमें ड्रैग करना है एजेस को टू फिट द डायमेंशंस जो हमें चाहिए. नाउ रीसाइज करेंगे हम बॉर्डर को बाय ड्रैगिंग द स्क्वायर्स एट द साइड एंड कॉर्नर्स until you are satisfied by the way your image looks. Once you are completely satisfied with your cropped image, press enter. Magic Wand tool can make and emerge selections if we press the shift key. You can also rotate your cropping border, move the cursor outside the border, and you will see how it turns into a double-headed arrow. Drag the arrow in the directions you wish to rotate your selection. Cropping to a specific size. If you wish to print your digital photos या फिर other images on standard size photo paper, you will have to copy your images. तो उसके लिए हमें अपनी इमेज ओपन करना है, सिलेक्ट करना है क्रॉप टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स. इन द ऑप्शन बार स्पेसिफाई द वैल्यूज फॉर विड्थ एंड हाइट. देन क्लिक ऑन योर इमेज एंड ड्रैग टू क्रॉपिंग बॉर्डर. नोटिस दैट जो बॉर्डर है वो कंस्ट्रेन है एंड यू कैन नॉट मेक इट वाइडर या फिर लॉन्गर देन द स्पेसिफाइड वैल्यूज. For example, if you enter 8 for width and 10 for height, whatever size you make the border, area within it will fit on an 8 into 10 photo. Once you are completely satisfied with your cropped image, press enter. Cropping with mark tool. So if you are in a hurry and you need just a simple crop, तो आप marquee tool का use कर सकते हो. And menu command crop with marquee tool आपको अपनी image open करनी है. Then select करना है rectangular marquee tool from the tool box. Then click and drag the mouse to draw a marquee around the area that you wish to crop. In the main menu, go to the image and choose crop. The image will be immediately cropped. Selected area is indicated on a screen by blinking selection border called marquee. Resizing image. Resizing in Photoshop help करता है हमारी to print images in standard photo sizes, resize and preserve the high quality of digital photos and enlarge small images to a poster size. Resizing to a specific size. Resize करने के लिए अपनी image को हम क्या करेंगे? In the main menu, go to File option and then New. In the New dialog box, click on Preset drop down menu. You will see several preset sizes जैसे 2 into 3, 4 into 6 and 5 into 7. Remember that 72 ppi is fine for online images, but a ppi of 150 to 300 is better for printed images. Choose the size that you wish and click OK. All the preset sizes are in portrait orientation, and if you wish to resize an image with the landscape orientation, you need to create your own preset. Create your own size. उसके लिए हमें टाइप करना है values in the width and height. For example, 7 into 5. Type your own desired resolution. 150 ppi for high quality prints and 72 ppi for good web images. Then click on Save Preset button. Resizing digital photos. Digital photos usually have large dimensions but high resolution, but low resolution. 72 ppi, which affects their quality when their sizes decreases या फिर increases. Now, when printed, the photos will be changed size, will look pixelated. And to resize the digital photos without losing the quality, हमें उसके लिए open करना है digital photo that you wish to resize. Then in the main menu, go to View option, Rulers, and you will see the dimension of your photo. Now in the main menu, go to Image and Image Size. In the Image Size dialog box, check करना है आपको Resample Image box of. Type in your desired resolution, anything between 150 to 300 ppi. The photo is now 3.208 into 3.083. The gradient tool allow करता है हमें to fill an area with the range of colors in a specified pattern. Next is enlarging image. Now, if you want to make your digital photo into a poster size image, you can do it in image size dialog box. However, just increasing the dimensions will make the image appear blurry and pixelated. So to enlarge the image without losing the quality, उसके लिए आप open करोगे digital image को that you want to enlarge. In the main menu, go to image and image size. Image size dialog box will appear. Make sure resample image box, if checked off, choose bicubic smoother from the drop down box. Now change the document size measurements to percent. Type in 110. This will increase the size of your image by 10%. Continue enlarging by 10% until you are satisfied with the size. Features of Photoshop. Revised user friendly interface. Photo editing या फिर photo manipulation lesser time में हो जाता है with little effort. Powerful tools हैं to enhance and change the color of the image by adjusting the brightness and contrast, color balance, full and saturation level curves, etc. Crop या फिर resize pictures without losing the quality of an image. Remove the unwanted objects from the picture using vanishing point tool. Create graphics for web applications.
with reduced file size, thereby helping in faster loading of websites. Layer effects preserves the original state of an image while manipulating another versions of it through layers. Now, red eye removal, digital cameras tend to cause various problems जैसे red eye या फिर hotspots if you use flash या फिर under exposure if you don't. In Photoshop आप correct कर सकते हो इन problems को as well as adjust कर सकते हो overall color of your digital photo. The digital camera flash is located right above the lens तो cause करता है red eye. However आप fix कर सकते हो अपने photos को easily in Photoshop. To remove the red eye आपको open करना है photo जिसे आपको correct करना है. Select the zoom tool from the toolbox. Click and drag the rectangle around the eye. Make sure your default foreground and background colors are black and white. Now आप hold कर सकते हो little black triangle of the healing brush tool button and select the red eye tool. Click on the red eye part of the eye and paint. Holding down the mouse button, you will see how the red eye will disappear. Hotspot removal. Now using a flash can also cause shiny areas as on people faces या फिर flash to reflect on shiny surfaces. To correct this, आपको अपनी photo open करनी है, select करना है clone stamp tool from the toolbox and in the option bar change the blend mode from normal to darken as shown in the figure. Opacity आपको करनी है to 50%. Choose soft edge brush. Set the diameter 40 or 50. Hold down the shift key and click in the clean area without hotspot to get a sample of color. Move tool is used to drag a selected part of an image to a new location. Clone stamp selection, paint over the hotspot and the light area will gradually darken. Adding flash, if you took pictures indoors without a flash, they will turn out underexposed and dark. So to fix underexposed photos, आप open करोगे digital photo को जिसे आपको correct करना है. In the main menu, go to layers, duplicate and in the next window, name the layer 1. Make sure layer 1 is selected. Then in the layers palette, select the image from the menu, select adjustments and select exposure. Select the amount of exposure, the whole image will lighten. Keep duplicating layer 1 until you are satisfied with your image. Saving a file, remember to save your work often. Saving frequently lessens the risk of losing the work that you have been doing. To save your Photoshop document, आप click करोगे file option पे, then save as. Navigate the place जहाँ पे भी आप अपने document को save करना चाहते हो using the drop down menu and the navigation window. Enter the name to save your project in the form of format drop down menu. Click on save button in the bottom right corner of the dialog box. Now, if you save your file as PSD, default Photoshop saving format, your layers will be preserved, but the file size will be large. If you save your file as JPEG, a common image format, your layers will be flattened and become one layer, and the file size will be significantly smaller. Let's revise the chapter. Adobe Photoshop CS6 is photo editing program. It is developed and published by Adobe Systems. Components of Photoshop CS6 are Tools panel, menu bar, option bar, and document window panels. Selection tool include करता है rectangular marquee tool, move tool, magic wand tool, and pressure tool. Alteration tool, brush tool, history brush tool, clone stamp tool, and blur tool. Drawing tools include करते हैं pen tool, path selection tool, color swatches, style, history, adjustment layers are the different palette of Adobe Photoshop. Basic image editing include करता है cropping, resizing, enlarging, red eye removal, hotspot removal, etc. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. So the very first question here is which is the latest version of Adobe Photoshop? Is PS6. What is the default extension of an Adobe Photoshop file? PSD. Who invented Photoshop? Thomas Knoll. Now which tool is used to remove the unwanted parts of a picture? Crop. And which key combination is used to deselect the selected area? Control plus D. Let's do fill in the blanks. Adobe Photoshop is in dash editing application software. Image. Dash is a number of pixels on a printed area of an image. Resolution. Dash contain functions that help you to monitor and modify images. Palettes. Dash layers can be used to link layers together. Adjustment. And dash is one of the most basic editing techniques that can improve your image cropping. Let's do true false. Adobe Photoshop CS6 is developed and published by Microsoft.
True. Tools panel, menu bar, option bar, and document window panels are components of Photoshop CS6. True. Drawing tools include pen tool, path selection tool. Marquee is a blinking selection border. False. And digital photos usually have large dimensions. False. So students, this was a complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise the chapter once again and learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.